Hello, namaste, Peripona Pailagu. मेरा नाम है रोहन कारियप्पा and firstly, let me apologize for being so lousy lately. No Insta lives, lesser upload frequency. भाई इसका बहुत ज़्यादा reasons तो मेरे पास है नहीं. It's just that I have not been in that zone of content creation lately and moreover I'm working on a very new venture जो आपको जल्द ही पता चल जाएगा, not related to YouTube by the way. For today let's talk about the most ignored aspect of hip hop on this channel and the most widely spread aspect of hip hop in the world, and the last sentence itself reveals why I chose to not talk about commercial music on this channel, and that's because it's already widespread. अब भाई widespread चीज़ को मैं और क्या ही समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? People can understand it, people can decide for themselves if they liked the music or not, ठीक है? But on the internet, if you don't talk about anything ना, people assume what you think about the very same thing and उसके बाद वो आपको judgment pass करने लग जाते हैं आप पे, ठीक है? Today's video is about why commercial music is also very important. Firstly, let's talk about what is commercial music. Well, this is a very subjective question, same like my favorite question that I like asking every freaking rapper. 1, 2, 1, 2, 3, 4. What is independent rapper? What is independent rapper? What is independent rapper? What is independent? What is independent rapper? इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 अलग लोगों से पूछोगे तो आपको 10 अलग डेफिनेशन मिल जाएगी ऑफ व्हाट कमर्शियल म्यूजिक इज. सीधे मौत हैड अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव अबाउट इट. दे क्लासिफाइड एनी म्यूजिक दैट कैन बी प्लेड इन क्लब्स एज कमर्शियल म्यूजिक. कुछ लोग बोलेंगे कि यार ऐसा म्यूजिक जिसका सोल पर्पस इज टू अर्न मनी एंड व्यूज. फॉर एग्जांपल एनी रीमेक दैट यू हियर, उसमें आपको एक पुराना गाना जो आपने ऑलरेडी बहुत बार सुन रखा है उसको एक नई पैकेजिंग में आपको वापस दे दिया जाता है. उसमें कुछ नया है नहीं, बट लेबल्स अंडरस्टैंड कि आंख मारे जैसे गाने के साथ आपकी एसोसिएशन पहले ही जुड़ी हुई है बिकॉज आपने वो पहले ही गाना सुन रखा है बार बार, तो व्यूज तो आएंगे ही चाहे पसंद आए या ना आए. Okay, for me, my definition of commercial music is anything that can be boosted on your car speakers and or can be easily consumed by the masses. Jump Kar by Emiway and Sunna by Bali are some good examples of classic commercial hip hop track क्योंकि उसमें आप नाच भी सकते हो और उसको आसानी से समझ भी सकते हो. But there's also a bad side of commercial hip hop, bad in double quotes, with tracks like पागल है and इसे कहते हैं hip hop. उसके बारे में बात करेंगे but later in the video. Before I start explaining the positive aspects of commercial music, here's a small little question for you. Who was the first Hindi rapper that you ever came across? Go back in time, थोड़ा सोचो, थोड़ा टाइम लो and then comment down below. You have 5 seconds. If you're like 90% of people, you would have commented one out of these 5 names. Bohemia, Honey Singh, Badshah, Raftaar, Emiway. Now think, out of tens of thousands of good and talented rappers, why was your first देसी rapper just one out of these 5? उसकी probability अगर आप mathematically देखोगे तो बहुत कम है. The answer is very simple. That's because जब आप hip hop से, देसी hip hop scene से introduce हो रहे थे, तब इन्हीं पांचों में से एक rapper mainstream को occupy करके बैठा था. अगर mid 2000s में आपने देसी hip hop सुनना शुरू किया है, then Bohemia must be your first rapper. अगर early 2010s में आपने सुनना शुरू किया है, तो Honey Singh होगा आपका first rapper. 2014-15 के आसपास शुरू किया है तो रफ्तार, 2016-17 उसके बाद शुरू किया है तो maybe Badshah, and 2018-19 में शुरू किया है तो most probably it could be Emiway. Now you have to realize one thing, getting introduced to the art form by its authentic flavor is highly unlikely because first of all अगर आप देसी हिप हॉप नहीं जानते तो YouTube पे आके आप सिकंदर गालो या सीधे मौत को सर्च ही कैसे कर पाओगे. And secondly, even by accident if you stumble upon a very authentic hip hop track तो आपको शायद उतना पसंद नहीं आएगा because किसी भी authentic चीज को कंज्यूम करने के लिए उसका टेस्ट धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है. अगर आपको डायरेक्टली डार्क चॉकलेट खिला दी जाए तो चाहे आपको मैं उसके 1000 फायदे बता दूं, भाई हार्ट के लिए अच्छी होती है, अरे यार यही तो ऑथेंटिक टेस्ट है, इसी में तो असली फ्लेवर आ रहा है, आपको फिर भी डार्क चॉकलेट में सिर्फ कड़वाहट ही महसूस होगी. If you can see where I'm coming from, you'll realize that commercial music is like a gateway to the underground hip hop community. It's like a funnel. मतलब millions of people will listen to a mainstream track. Some will think it's trash, other will like it and they'll try to dig deeper to find rappers like Fatal, Kid Shot, Pradeep, etc. And after that, there's no turning back. Now I thought about it a little bit and I feel that there are mainly 2 reasons why an artist decides to make a commercial track. Artists like King have a very clear goal of catering to the masses. He's known as the hit machine and that's why he aims at musicality
एंड रिलेटेबिलिटी, ताकि वो मासेस को अपने गानों की तरफ अट्रैक्ट कर पाए, एंड ही इज बीन प्रीटी सक्सेसफुल एट डूइंग दैट. Artists like Raftaar, Emiway, Buford, Krishna and more love to experiment with their music. And that's why you'll see them hopping around at different subgenres of hip hop. You'll catch them making all kinds of music because उनके लिए भी creative process जो है उनका गाने बनाने का वो interesting बना रहता है. And also commercial music means possible attention from the masses. And more the view count, higher the clout and more the money. And अगर आप एक teenager हो, let me clear your doubt, money is not a negative thing. It is very important. Now moving on, let's understand masses. Now masses do not want to hear metaphors from you. They do not have any association with your technicalities. They just want to bump their heads to the music that you're rapping on. And if the song is easy for them to sing along, voila, you have your 100 million views right there. And that brings me to my next point. Badshah. He doesn't make songs like Pagal Hai because वो अच्छा lyricist नहीं है and he doesn't know any better. Check out his 3 AM session on his channel and you'll understand his true potential. And then check out the view count of 3 AM session and you'll realize कि Pagal Hai और 3 AM session के views में कितना difference होता है. He makes songs like Pagal Hai because labels understand कि भाई radio और clubs में ऐसे ही गाने बजेंगे. And if label is paying Badshah a hefty fees, they'll make sure that they earn 100 times more than that. Summing it up, ये समझ लो कि most of us have been a part of this funnel जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. And this very same funnel will fetch hip hop more audience. Sometimes this funnel can be a movie based around hip hop, sometimes it can be a beef that's going around, sometimes it can be a popular mainstream artist, etc. The aim of this video is not to suddenly make you like and appreciate commercial track. नहीं भाई, आपको अभी तक जो पसंद था वही अच्छा है भाई, वैसे समझ के चलो. बट रादर दिस वीडियो एम्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई एन आउटकास्ट ऑफ हिप हॉप इंडस्ट्री कैन ऑल्सो हेल्प इट ग्रो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वेल दैट्स प्रीटी मच इट. इस वीडियो में मैंने जो कमर्शियल म्यूजिक की तारीफ करी है, दैट्स जस्ट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हिप हॉप सीन एंड द कंज्यूमर ऑफ हिप हॉप. ठीक है, एज एन आर्टिस्ट अगर आप उसकी तारीफ करने जाओगे तो और भी बहुत सारे फायदे हैं. वन बीइंग मनी, फेम एंड अ लॉट मोर. ठीक है, with that it's time to end the video. If you like my content then make sure you hit the subscribe button. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करके निकल लेना. ठीक है, ऑल्सो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, if you want to support me and this channel then you can buy my merch. A lot of new designs are out. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो एक प्रोमो कोड भी आपको छोड़ दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई हैंडल इज @ROHANCARIAPPA. Until next time, it's me Rohan Karyappa signing off. छोड़ो कल की बातें, कितनी सारे रातें मैंने कैसे काटे, वो जो सारे वादे खोले तूने धागे, मैं भी आया आगे. वो बोले मुझे लेके चलो ना, मनाली मलो ना, टेनाली रमना, जैसे वो शातिर पर जाहिर से बातें की, मैं भी ना खिलो ना, टुकड़े करे तूने दिलों का.